साइंस प्रजापति। मैं बुंदेलखंड में कृषि सलाहकार के रूप में विगत 5 साल से काम कर रहा हूँ। बुंदेलखंड में विशेष समस्या पानी की कई सालों से रही है। आए दिन भी समस्या बढ़ती जा रही है। बुंदेलखंड के 13 ज़िलों में लगभग सभी जगह पानी की समस्या है, जिसके कारण आए दिन के यहाँ के जो भी खेती से रिलेटेड हमारे किसान हैं वो खेती को मजबूरी में छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार वैद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार कुशवाहा है। मेरा नाम लीला देवी प्रजापति है। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव। हमारा नाम है भुवन देवी। चूँकि मैं खुद एक फार्मर हूँ और मेरे पिताजी दादा लोग भी खेती करते रहे हैं, पहले से आज की कंडीशन में ऐसा है कि दिन प्रतिदिन हम लोगों की खेती की जो उपज होती है वो कम होती गई है, जिसके कारण मेरे परिवार की और मेरी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। परंपरागत खेती में बारिश का बहुत बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि जिस समय अपन बोनी करते हैं उस समय पे पानी नहीं गिरता है। पानी ना गिरने से कई बार ऐसा होता है कि पौधा जर्मिनेट ही नहीं होता है। जब जर्मिनेशन नहीं आता तो कई बार किसान को दोबारा बोनी करनी पड़ती है। शुरू में तो एक समस्या आती है, जब अपना हार्वेस्ट का समय आता है तब भी पानी अपने हिसाब से या फसल के हिसाब से नहीं गिरता है। तो उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, जब अपन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं तभी बारिश हो जाती है तो इस फसल को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इसको अपन रोक नहीं सकते। ये बहुत बड़ी समस्या होती है परंपरागत खेती में। जिस समस्याओं के साथ साथ एक तो खर्चा ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, और जिस वजह से हम लोगों को आज आधुनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मुझे आधुनिक खेती में नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए नेट FM कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इजराइल की कंपनी है। और नेट FM कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि नेट FM में जो ड्रिपर होता है, ड्रिप में तो जो पहला ड्रिपर है और लास्ट का ड्रिपर, इन दोनों के जो पानी का डिस्चार्ज है वो बराबर समानता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ पे अगर 8 से 10 हज़ार प्लांट आते हैं अपने, तो 10,000 के 10,000 पौधों के पास बराबर पानी जाता है और बराबर खाद जाता है, जिससे हमारे 10,000 पौधे लगातार हमें फल देते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ पौधे फल दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। जी नेट FM में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का जो ये सर्वे है इंडो इजराइल MOU जो साइन होना है उसको लेके, आई थिंक अगर ये चीज़ होती है तो इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। लो वाटर फार्मिंग लोग ऑप्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए। और जो हमारे चेक डैम्स वगैरह हैं उसमें भी आई थिंक ये लोग हेल्प करेंगे। सेकंड, जो पुराने तालाब हैं, पुराने कुएं सूखे हुए पड़े हुए हैं, एंशिएंट चंदेलकालीन जो यहाँ पे कुएं हैं, तालाब्स हैं, उनका भी आई गेस रिवाइवल में काफ़ी हेल्प होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसान को पानी कितना यूज़ करना है खेती के लिए, उसमें लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कौन सी फसल के लिए हमें कितना पानी लगाना है। मतलब एक नॉर्मल गेहूं की फसल के लिए कितने पानी उनको चाहिए पड़ेगा, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उनके साथ काम होगा, तो पानी भी कई जगहों पे रोका जाएगा। आई थिंक हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी के संग संग मिट्टी भी पैरेलली चलती है। जहाँ पे हम मिट्टी रोक पा रहे हैं वहीं पे हम पानी रोक पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आसपास के जो नदियाँ हैं, नदियों के आसपास से लोगों ने पेड़ हटा दिए हैं, काट दिए हैं, या लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से नदियों के और नहरों के आसपास हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वहाँ की मिट्टी रुके। और जितना वहाँ पे मिट्टी रुकेगी, पेड़ लगेंगे, उतना ही वहाँ पे पानी रुकेगा। वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उससे इंक्रीज होगा। Hi, my name is Dr. Lior Asaf. I'm the new water attaché in the Israeli embassy in New Delhi, India. Israel and India have a very close relationship, and following the decision by the government of Modi, they decide that Israel will designate a professional technical expert in the water sector to be the new first time water attaché that promote the relationship in the water sector between Israel and India. I'm coming from a long career, mainly in the academic. I did a PhD water resources management, and later on I work in the private sector 15 years all over the world, in Tanzania, in Africa, in Congo, Ghana, Angola, Kenya, and more. And as well in this region, in Sri Lanka, Central America, in Honduras, in Haiti, in Turkey, and many other countries. My work includes water resources assessment for both water supply for agriculture,
water supply for cities, master plans for regional and for entire nation. Today I'm here in the Bundelkhand region that selected a few years ago to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundelkhand region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholder from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution both on groundwater as well as surface water, and combine the engineering knowledge with the agronomical knowledge, and to build a resilient system that can supply water through year around and allowing 3 crop rotation instead of 2 rotation that's these days. This result with greater income to the local farmer, with greater resilience for the system to supply water even in drought years when there are less water from natural resources, and overall to achieve a goal of sustainable income and sustainable agriculture here in Bundelkhand region that considered to be one of the affected and the less provided region in India. मेरा नाम शोभित कुमार है। मैं नेटाफेम इरिगेशन को प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया में जो फ्लड इरिगेशन के द्वारा ये पारंपरिक खेती करते थे, ठीक है, फिर यहाँ पे आके जो हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यहाँ पे प्रचलित किया और स्थापना कराई, ठीक है। ये हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है उसका ये हेड यूनिट पार्ट है। ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है जो हमारे पंप के द्वारा जो सैंड आती है उसको यहीं पे रिमूव कर देता है। और फिर उसके बाद जो भी बालू हमारी छोटी पार्टिकल जो भी आगे बढ़ जाती है तो हमारा ये जो स्क्रीन फिल्टर है वो इसको रिमूव करता है। फिर हमारा पानी इस पीवीसी पाइप के थ्रू हमारा फील्ड में पहुंचता है। ये हेड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फर्टिलाइज़र टैंक बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे ये क्या है, फर्टिलाइज़र हम वाटर सोल्यूबल इसमें यूज करते हैं और फील्ड में हम सप्लाई करते हैं। जैसा क्या था, फार्मर लोग पहले छिड़काव विधि के द्वारा फर्टिलाइज़र या छिड़काव विधि के द्वारा करते थे, तो उसमें समस्या उनको आती थी, सोर्सेज ज़्यादा लगते थे, लेबर लगते थे। अब इस फर्टिलाइज़र टैंक के द्वारा हम यहीं से काम कर सकते हैं। So I'm Randhir Chauhan. I'm the managing director for Netafim Irrigation India, which is a wholly owned subsidiary of Netafim Limited, Israel. To start with, I have visited Israel close to 100 times, and those who are learned and read around, they always have an impression that there is a water scarcity in Israel. And the moment you land in Israel, actually you see the landscape around you, you go to the hotel and then you meet people and go to their houses and you see common places. I mean, you won't realize that there is an issue of water scarcity in Israel. Now, one wonders that if about 60% of that country is like a desert and the water or the rainfall is so less, why don't you feel it, right? So there must be something right which Israel probably is doing in the area of water management. And with my exposure, I learned it is because of following things. The first is they have the right policies. The second one is that they have a tremendous awareness. You see that people are aware that there is an issue of water and we need to conserve that water.
The third one, they have developed a state-of-art infrastructure to implement those policies and the things they want to do with this water scarcity. And then comes to the innovation to extract value of each drop in Israel. I think these are the four broad pillars which gives you that feeling that the water is in abundance at Israel. So from Israel, let's come back to India. So when you come to India, I mean, there are studies and they show you that by 2030, the demand and supply is exactly 100% gap. It's going to be twice, right? Again, talking about numbers, about 256 districts out of 700 districts, they have a different level of water stress already. And think about it, that in our country, the situation during the summer, that television or newspaper or you travel, you come across situations where in rural and urban areas, people are queuing up for water and they don't have even enough water. I think this is a good enough reason that we collaborate. And that is what I think everybody realizes, from policymakers, politicians, and also the technocrats on both sides. And that is where I think this collaboration started, and it has to go very long way. When it comes to Netafim, we deal in agriculture, and the water used in agriculture is in irrigation. So let me give you a context. 90% of our drinking water is extracted from the ground, and about 70% of agriculture water is also extracted from the ground. Since it is below the ground, the crisis is not visible. We have to bore deeper and deeper to get that water, but this water is limited. Now, let me come to this agriculture. The 70% of water where it is going, drip irrigation technology improves the water use efficiency about 40 to 50%, according to the studies in India and abroad. So, I just said 70% of the water gets used in agriculture. Think about it, if you improve that efficiency even by 20, 30, 40%, it's a very, very significant impact it would create on the usage of water and make that water available for other areas. And this is what we have been doing country after country after we started in Israel in 1965. So we came to India about 25 years back, and we have reached to we reach every year about 1 lakh farmers. And if you look at this technology and what it has done, all put together by all players, we have reached more than 1 crore of farmers. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये